Okay, so let's continue with our discussion about Fourier transform. And now let's apply the concept that we developed by solving some examples to get an idea कि अगर आपके पास एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल गिवन हो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम कैसे फाइंड करेंगे और फिर उसको ग्राफिकल उसकी किस तरह इंटरप्रिटेशन करेंगे. ठीक है. So the first example is that signal is x of t and it is e power minus a times t into u of t, such that this constant a is some kind of a positive number. So it's obvious that when this is a positive number, this exponential will be e power minus something. And we know that e power minus something is kind of a decaying exponential signal. And if signal is decaying exponential, it means it will have finite energy. As a result, it's possible कि इस सिग्नल का हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकें और वो कन्वर्ज हो. So by looking at this signal और फिर जो previous हमने conditions define कर ली हैं उनको अगर हम use करें, it's obvious कि इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करता है. ठीक है. वो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? We can find with the help of this equation जिसको आप एनालिसिस इक्वेशन कहते हैं या फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन कहते हैं. So this is the equation that I'm going to use. Now the signal that we have, it's u of t. So it means we have to integrate from 0 to plus infinity. And then you have e power minus t, e power j omega t, d of t. So this is represented as e power minus a plus j omega t, 0 to plus infinity. So if you solve this integral, it's a simple one. You just need to put the plus infinity as upper limit and lower as 0. So what is the final result that you will get? You will get 1 divided by a plus j under the condition that a is greater than. So this is the Fourier transform of this signal. Now Fourier transform, as I mentioned before, it's a complex number. Generally Fourier transform will be some kind of a complex number, which in this case we can see that for this particular example the Fourier transform is complex. So if I want to look at this Fourier transform graphically, I need to plot two graphs, one for the magnitude and one for the phase part. So what is going to be the magnitude of this? So the magnitude of Fourier transform will be equal to 1 divided by a square plus omega square under the root. This is how you find the magnitude of this part. And then phase part, phase will be equal to minus tangent inverse of omega by a. And now if you plot them graphically, so let's plot the magnitude as a function of omega. So you will get something like this. And if you plot the phase part, as a function of omega,
you will get a shape like this, where this value will be pi by 2 and this value will be minus pi. So this is magnitude spectrum, and this graph is known as phase spectrum. So from the magnitude spectrum, we can make this conclusion that this signal, as a function of time, when we look at this signal in terms of its frequency domain representation, we can see that the lower frequencies, they are dominant as compared to higher frequencies. So as frequency increases, you can see that this magnitude is decreasing. So it means that these lower frequencies close to zero, they are more dominant in this particular signal. Or you can say that this frequency, this signal is a low frequency signal. Okay. Let's consider some more examples. Example number 2. X of t is equal to e power minus a and then absolute value of t. And in this case as well, a has to be greater than 0. So in order to find the Fourier transform, first of all, if I want to answer this question, whether this signal will have a Fourier transform. So one of the condition is that signal should have finite energy. So if you look at if you plot this signal as a function of time, you will see that this signal is a finite energy signal, because if you plot it for different values, so for positive values, you get this behavior, and for negative values as well, you get this behavior, exponentially decaying function. And this is at t equal to 0, it will have a value equal to 1. And as t increases in the positive direction, or as t decreases in the negative direction, this signal is going to decay exponentially. So it means this is a finite energy signal. So what will be the Fourier transform? So from minus infinity to 0. So from minus infinity up to 0. The signal, because t is negative, so when t is negative, so this becomes plus, so we get e plus 8 e power minus j omega. And then the other interval is from 0 to plus infinity, which means from this point onward where t is positive. So when t is positive, you get e power minus and e power minus. Because of the given example, we have split this interval from minus infinity to plus infinity, plus the first between minus infinity to 0, and then from 0 to plus infinity. And then we consider the proper expression for the case. So this is a simple integral. I'm not going to spend time on that, how to find this integral. This is straightforward. So I'm just going to write the answer. For the first integral, the answer will be 1 divided by a minus j omega. And from the second, you will get 1 divided by a plus j omega. And then you can take the LCM. So this becomes a square plus omega square.
because these two complex numbers are conjugate of one another. So a square plus omega square, and in the numerator you get 2 times a. So this is the Fourier transform of the given signal. In this case, you can, if you look at this expression, this is real. So for this signal, Fourier transform is not complex. It is real. Its imaginary part is 0. It means you just need one graph. Previously, I used 2 plots, magnitude as well as phase. Now we have only real. So it means we just need one graph to represent this signal. So if you plot this, you will get, let me draw it over here so that you can look at this signal as function of time and as well as function of frequency. I'm going to plot this. Now I just need one graph. I don't need to mention the magnitude. This is real number, so it will have only magnitude. We will get a graph like this. Let's consider third example. One of the basic signal that we introduce in this course is unit impulse signal. So unit impulse signal, which is mathematically represented like this. So let's find out what is the Fourier transform of this signal, because this is a non-periodic signal. So it will have Fourier transform, and because we know that area under impulse signal is equal to 1, it means it will have finite energy. So it means its Fourier transform will converge. And what will be the Fourier transform? If you make use of this standard expression, so what we will get? Our signal is delta of t. Okay. So what will be the answer? What will be the Fourier transform of this? Sir, 1. 1. 1. So it means कि टाइम डोमेन में जो हमें सिग्नल, जिसको हम ग्राफिकली इस तरह देखते हैं, तो वी हैव impulse signal delta of t. इस सिग्नल को अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में विजुलाइज करें तो हमारे पास रिजल्ट ये आ गया कि इट इज इक्वल टू 1, which means we have a straight line. From minus infinity to plus infinity. Irrespective what is the value of omega, we get Fourier transform equal to 1, which means that inside this signal, if you have a signal like this, how many frequency components are present in that signal? So this graph is telling us that impulse signal consists of all frequency, starting from the lowest frequency to the highest frequency. And also all frequency components, they have equal contribution. So whether there is a omega equal to 0, how much is the magnitude? 1. If you go slightly upward, what is the magnitude of this component? It is also 1. If you go further, what is the magnitude of this? Is also 1. So all of them have equal contribution in this particular signal. Let's consider another example.
So let's consider a very common signal that you will encounter in Fourier transform, and that is rectangular pulse. So mathematically, rectangular pulse is represented as it is a signal with magnitude equal to 1 during the time interval t less than some number t1. And outside of this interval, for any value of t outside of this time interval, it's equal to 0. So it means graphically, we are talking about a signal which is like this. So minus t1 plus, and its value is equal to 1. This is what we call as rectangular pulse. We are interested in finding its Fourier transform. So this is a non-periodic signal. So using the general equation, if you apply this equation to the signal, so this signal is only non-zero between this interval. So upper limit is plus t1, lower limit is minus t2. And within this interval, it's equal to 1. So we get 1, and then we have e power minus j omega t d. So this is a simple integral. What is the result? You will get 2 sine omega t1 divided by. So this is the Fourier transform of this rectangular pulse. If you plot this signal graphically, so let me plot it somewhere over here. So now I'm plotting the Fourier transform, which is function of omega. The shape, if you plot this is what you will get. And the values where it will passes to 0. So this will be equal to pi by t1, and this will be minus pi by t1. And similarly, this one is again the point at which it is passing through 0. It will be equal to 2 pi by t1. This one will be 3 pi by t1, and this will be 4 pi t1. And similarly, this will be minus 2 by t1, minus 3 by t1, and because of this sign. What is the name of a signal which is having this shape? इस किस्म के सिग्नल को आप लोग क्या नाम देते हैं? Sync function. Yes, so this is what we call as sync function. I will talk about this function or signal in more detail in a short while once we solve one or two more examples. Now, the other example that now I'm going to do, that is fifth example, before we move on to next topic. In this case, example number 4, we consider a signal in time domain which is having a shape that we called as rectangular pulse. When we found its Fourier transform, we get something like this, which is known as sync function. Now, in fifth example, let's consider that we are given
Fourier transform of some signal, and it's mathematically represented as equal to 1 and equal to 0, and it is equal to 1 for the values of omega less than some value capital W, and for the values of omega less than W, it is equal to 0. So if you plot this graphically, so now if you plot this given Fourier transform, it's obvious that you get something like this. सर तो दोनों में ओमेगा लेस देन डब्ल्यू है, तो उसमें फ़र्क क्या है? एक में 1 रहता है वैल्यू, एक में 0। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक की हुई है, यू नीड टू टेल मी कि यहाँ पे मिस्टेक है। ओके, अब ठीक हो गया। यस सर। So I can also make mistake and it's your responsibility to tell me कि सर आपने कोई mistake की हुई है, ठीक है? Okay, so this is the Fourier transform जो हमें given है, and by looking at its shape हम कह सकते हैं कि इसकी जो shape है वो rectangular। हमारे पास एक सिग्नल का Fourier transform है, and visually हम कह सकते हैं कि it's kind of a rectangular function। इस केस में हमने फाइंड क्या करना है कि we need to find out what is the time domain signal जिसका ये Fourier transform। So now x of t हमने फाइंड करना है। So it means we need to make use of inverse Fourier transform expression जो हमने derive की हुई, which is this one। So let me substitute the limit। So now from minus w to plus w, this signal is equal to 1, ये 1 के बराबर है। So we get this thing। So इस इंटीग्रल को अगर आप evaluate करें, you will get x of t आपके पास आएगा sin of wt divided by pi। और इसको अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करें, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x of t को अगर हम प्लॉट करें, we will get a signal like this। और जहां से ये 0 क्रॉस कर रहा होगा, that will be equal to pi by w, and this will be minus pi by w, and so on। इस तरीके से ये minus 2 pi। So now you can see that in this case टाइम डोमेन फंक्शन जो है वो सिंक फंक्शन। तो वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है हमारे पास, जिसको हम लेटर ऑन जब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म जब हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वहां पे इस प्रॉपर्टी को हम डिटेल में देखेंगे। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी। ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। और वो ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी को इस दो एग्जांपल्स को अगर हम देखें, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब टाइम डोमेन में if we have a rectangular pulse in time domain, its Fourier transform is kind of a sinc function, and when we have a Fourier transform
that look like a rectangular function, when we find the inverse Fourier transform, we get a time domain signal which is having a sinc function behavior. तो ये दूसरे एक दूसरे के बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इनवर्स प्रॉपर्टीज, और इस प्रॉपर्टी को फिर हम ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी जो डिटेल में पढ़ेंगे उसके साथ इसको रिलेट करेंगे कि इस प्रॉपर्टी, दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसको हम ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी कैन हेल्प अस कि अगर हमें एक टाइम डोमेन सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें पहले से पता है, एक टाइम डोमेन सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें पता है, और फिर हमें एक फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन हो जो कि उस टाइम डोमेन सिग्नल की तरह हो, तो हम इजीली उसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये जो हम सिंक फंक्शन को, जो मैंने पीपल ऑलरेडी नो अबाउट इट, इसको अगर हम स्टैंडर्ड इसको इक्वेशन लिखें कि सिंक फंक्शन का क्या मतलब होता है, तो व्हेन वी से, जब हम कहते हैं कि सिंक थीटा, so whenever you have something like sine of pi theta divided by pi theta, इसको हम कहते हैं सिंक फंक्शन, where theta is our variable. Now another important property that we are going to look at it is ये जो एग्जांपल नंबर 5 हमने किया, इसमें जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें गिवन है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो सिग्नल की जो बैंडविड्थ है वो ये है। सिग्नल जो है हमारे पास, अगर हम सिर्फ बैंडविड्थ, फॉर बैंडविड्थ वी ओनली कंसीडर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास सिग्नल की जो बैंडविड्थ है वो ये। तो इस सिग्नल के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट हैं वो इस रेंज में, 0 से लेकर W तक, दिस इज द बैंडविड्थ ऑफ दिस सिग्नल। ठीक हो गया, और इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन सिग्नल है उसको अगर हम देखें, सो जो आपके सिंक फंक्शन में जो ये मेजर, आप इसको सिंक फंक्शन में इस चीज को आप कहते हैं मेजर लोब, तो हम क्या कहते हैं, मेन लोब या मेजर लोब, और ये जो आपके पास हैं ये इनको फिर माइनर लोब्स कहते हैं। ठीक, सो इट मीन्स के मोस्ट ऑफ द जो आपके पास टाइम डोमेन की जो कंटेंट है वो इस रेंज के अंदर लाइक कर रहा है। ठीक है, पाई बाय डब्ल्यू के साथ है। सो यू कैन सी दैट दिस डब्ल्यू आपको डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है, इट्स काइंड ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप। इस चीज को मैं एक और आपको स्लाइड दिखाता हूँ, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू शो यू। यस, दिस वन। इन दिस केस हमारे पास 3 एग्जांपल्स, A, B and this third one is, so you can see पहला जो एग्जांपल है हमारे पास जिसको हमने x1 से शो किया हुआ है, तो एक सिग्नल है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है x1, और इसकी जो बैंडविड्थ है आपके सामने। ठीक है, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो टाइम डोमेन सिग्नल है वो ये वाला है x1। ठीक है, फिर दूसरी एग्जांपल अगर आप देखें x2, इस एग्जांपल को अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो आप क्या कहेंगे, व्हाट वी हैव डन विद द सिग्नल, व्हाट हैज हैपेंड टू द सिग्नल। x2 को अगर x1 के साथ कंपेयर करेंगे तो आप क्या कहेंगे, व्हाट वी हैव डन टू द सिग्नल। सर बैंडविड्थ कम किया सर है। बैंडविड्थ कम है सर। बैंडविड्थ कम की, इसका मतलब है कि हमने इसमें फ्रीक्वेंसीज को हमने लिमिट कर दी है, इस सिग्नल के अंदर अब कम फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, इसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसीज थी, इसमें कम हो गई। इसका मतलब है कि हायर, इसका मतलब इसको आप इस तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं एज इफ कि हमने इसको यहाँ से चॉप कर, हमने इसको यहाँ पे इसको इस तरह कर। ठीक है, अब हमारा जो सिग्नल है वो उसकी बैंड, तो इसके अगर आप देखें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन सिग्नल पे अगर आप देखें क्या इफेक्ट पड़ा है, ये जो मेजर लोब है वो क्या हो गई है, ये नैरो थी, ये इसकी विड्थ ज्यादा हो गई।
एंड इट्स ऑब्वियस कि इसकी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, x2 की फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू x1 क्या हो गई, आप क्या कहें? सर रिड्यूस हो गई, X1 रिड्यूस हो की गई, ज़्यादा ठीक। फ्रीक्वेंसी है, X2 की कम यस, है। कम हो गई। इस तरीके से थर्ड केस अगर आप देखें, इसमें हमने x3 को लिया है जिसमें इसको और भी इसकी बैंडविड्थ को कम कर दिया। ये W2 है, अब ये W3, हमारा सिग्नल जो है सिर्फ ये वाला, ये वाला। और इसका जो हमने कॉरेस्पॉन्डिंगली जब टाइम डोमेन सिग्नल देखा, उसको आप देखिए इसकी जो विड्थ है ये और भी ये ब्रॉड हो गई, ठीक है। इसका मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कंटेंट और भी कम हो गया। सो नाउ अगर आप इस इन फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन को आप ना देखें, सिर्फ इन सिग्नल्स को देखें x1 x2, तो बाय लुकिंग एट इट इट्स ऑब्वियस कि आप कह सकते हैं कि x3 सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, फिर उसके बाद x2 है, और सबसे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सिग्नल इस स्लाइड पे आपको नजर आ रहा है वो x1, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को रिलेट करें कि आप इसको किस तरह रिलेट कर रही हैं कि आपके पास, मैं इसको तो रिलेशनशिप हम जो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो क्या है, वी विल से कि हमारे पास जब टाइम डोमेन में अगर सिग्नल नैरो होगा, तो अगर टाइम डोमेन में नैरो सिग्नल है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारे पास क्या सिग्नल होगा, ब्रॉड बैंड होगा या वाइड बैंड सिग्नल। तो टाइम डोमेन में जितना नैरो विड्थ का सिग्नल होगा, इसका मतलब है कि उस सिग्नल के अंदर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है। तो दिस इज काइंड ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप जो हम देख सकते हैं between time domain and frequency. Okay, let's move on to next topic, and that is related to Fourier transform for periodic signals. तो अब तक हम क्या कर रहे हैं कि पीरियोडिक सिग्नल और नॉन पीरियोडिक सिग्नल की हमने एक डिफरेंशिएट किया हुआ है, that if signal is periodic then we will have its Fourier series representation, and if signal is non-periodic or aperiodic then we will have its Fourier transform representation. But now in this topic what we are going to do is कि जो Fourier transform है, which is a more generalized tool as compared to Fourier series, even if signal is periodic, not only can we have its Fourier series representation, we can also have its Fourier transform representation. But that Fourier transform will be very special type of Fourier transform. तो इस वक्त जो हमने जितनी भी एग्जांपल्स इस पर्टिकुलर उसमें की हैं, इसमें आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जितने भी फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड किए हैं, इनको अगर आप ग्राफिकली देखें आपको नजर आ रहा है कि दे आर कंटिन्यूअस इन नेचर। आपका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है इट इज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा, और आपके पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एक्स ऑफ जी ओमेगा। इस एग्जांपल को देखिए, इस एग्जांपल को देख लें। थर्ड एग्जांपल में अगर आप देखें, इवन जो इम्पल्स फंक्शन है उसके लिए भी आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ ओमेगा। दिस इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ ओमेगा। तो ऑल ऑफ द एग्जांपल्स जो हमने किए हैं इसमें आपने देखा था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है एक कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ ओमेगा है, ठीक है। बट व्हेन वी रिप्रेजेंट पीरियोडिक सिग्नल in terms of its Fourier transform representation, we will see that इस केस में जो फोरियर ट्रांसफॉर्म एक यूनिक किस्म का ट्रांसफॉर्म होगा जिसमें आपको इम्पल्स सिग्नल से इम्पल्स फंक्शन से इन्वॉल्व, ठीक है। सो लेट मी राइट दिस स्टेटमेंट और इसको फिर हम प्रूव भी करेंगे।
So Fourier transform is a general framework that can be used for periodic signals as well. However, Fourier transform of periodic signals will consist of train of impulses. So what is the uniqueness of Fourier transform? जब periodic signal जितने जो भी periodic signal हो, जब आप उसको Fourier transform में represent करेंगे, you will find out कि उसकी Fourier transform में आपको क्या नजर आने चाहिए. There will be impulses, and you already know कि impulses exist only at one particular point. As a result, आपके पास जो Fourier transform होगा, वो continuous in nature नहीं हो जाएगा, बल्कि वो discrete in nature बन जाएगा. अब ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, लेट्स फाइंड इन द नेक्स्ट सेशन कि इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है, किस बेस के ऊपर मैंने ये स्टेटमेंट दो दी. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट सेशन.